Hello everybody and welcome to my channel. In this video I'm going to discuss some very important numericals from the chapter Pressure in Fluids and Atmospheric Pressure, which is the fourth chapter of Physics of Class 9. So here is the first question. A boy weighing 60 kgf. So this is the weight of the boy given, 60 kgf. Remember that weight is a force. So the force is given, the force exerted by the boy is given. Now the boy is wearing shoes with a heel of area of cross section 20 centimeter square. तो वो जो लड़का जिसका वेट 60 kgf है वो जूता पहना हुआ है, उस जूते का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है. While a girl weighing 45 kgf, so 45 kgf is the weight of the girl or the force exerted by the girl on the ground, and she is wearing sandals with heel of area of cross section 1.5 centimeter square. तो उस लड़की का भी हील का एरिया दिया हुआ है. कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड. हमें क्या करना है, हमें दोनों का प्रेशर को कंपेयर करना है. प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय देयर हील्स. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेशर जनरेटेड और एक्सर्टेड बाय द बॉय. सो हमने लिखा उसको पी बॉय, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉय, राइट. सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट divided by area of cross section. I hope you all remember this. Now thrust means the perpendicular force. So what is the force? The boy is exerting 60 kgf, which is the weight of the boy, and the area of cross section is 20 centimeter square. So upon cancellation we will get 3 kgf per centimeter square. This is the pressure exerted by the boy. Now let us find out the pressure exerted by the girl. So P girl, this is the pressure exerted by the girl. So obviously the same formula, thrust divided by area. What is the thrust exerted by the girl? The weight of the girl, 45 kgf, divided by area of cross section of her sandals, that is 1.5 centimeter square, right? So this will come out to be 450 divided by 15, if I remove the decimal, kgf per centimeter square. Okay, so this is 30 kgf per centimeter square. Now I have to compare them, compare their pressure. So P boy divided by P girl, that means pressure exerted by the boy divided by the pressure exerted by the girl on the ground, that is 3 kgf per centimeter square divided by 30 kgf per centimeter square, and very clearly the ratio is 1:10, right? So simple to understand. Now moving to the next question. Now this is our next numerical. Calculate the pressure due to water column of height 100 meter. So the height of water column is given in the question, that is the value of h is given in the question, right? And the value of g is also told. We have to take 10 meter per second square, and the density of water is 1000 kg per meter cube. Now quite simple to understand, the very easy formula and obvious formula, pressure due to fluids is h rho g. This we have already studied. So h is given in the question, 100 meter, which is already in the SI unit. We need not bother about the units. Rho is also given in SI unit, 10 to the power 3 kg per meter cube, into g. The value of g is given 10. This is what we have to take, right? So answer will come 10 to the power 6 Newton per meter square. Or you can also write, what is Newton per meter square? 10 to the power 6 Pascal. Okay, this is the simple way of solving. Moving to the next question. So this is our next question. At what depth below the surface of water will the pressure be equal to twice the atmospheric pressure? पानी के कितने डेप्थ में जाएंगे, कितने नीचे जाएंगे कि वहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दुगना होगा. यही हमारा क्वेश्चन है, वो डेप्थ हमें निकालना है.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू दिया हुआ है. Now, the value of atmospheric pressure is not given in SI unit. So, my first thing that I'll do is I'll convert this atmospheric pressure into SI unit. Atmospheric pressure is represented by P naught symbol. ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसको 10 टू द पावर -2 से 2 बार डिवाइड कर देंगे. तो पावर 2 हमने लिख दिया, विच विल गिव अस 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So this is, now we have converted the atmospheric pressure in SI unit, Newton per meter square, 10 to the power 5 Newton per meter square. Now what we will do next, density of water is given 10 to the power 3 kg per meter cube, ये दिया हुआ है. साथ ही साथ हमें G का वैल्यू भी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलवेज वी हैव टू राइट द गिवन वैल्यूज. ओके, गिवन पर मार्क्स रहता है. Now we have to find out the depth below the free surface of water where the pressure is twice the atmospheric pressure. So let that depth be h. वो depth क्या है? h. So हमारा ऐसे हम लिखेंगे प्रेशर एट अ डेप्थ h below the free surface of water ये जो डेप्थ h पर जो प्रेशर है that is equal to how much? That is equal to, they have told, that is equal to, first we will form the equation, that is equal to twice of atmospheric pressure, no doubt. But what is the general formula? कि अगर हम ये पानी है बीकर में at some depth, we are talking about depth A below the surface of water, यहाँ पे ये पानी का प्रेशर ड्यू टू द वाटर कॉलम प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर, दोनों एक्ट हो रहा है. तो एट दिस पॉइंट ए व्हाट आर द टू प्रेशर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट ए? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग क्योंकि सबसे ऊपर तो हवा है, एंड देन दिस वाटर कॉलम, तो इस पानी का फिर प्रेशर, तो दोनों चीज एक्ट हो रहा है. तो हमने क्या लिखा? प्रेशर एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन, ये हमेशा होता है जनरलाइज्ड इक्वेशन. प्लस इसके साथ क्या होगा? ये पानी का प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट h. तो हाइट h का वाटर कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ऐड होके हमें इस पॉइंट A पर टोटल प्रेशर मिलेगा. नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? प्रेशर एट डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है कि ये ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. दैट मीन्स 2 p नॉट है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने p नॉट लिया, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज p नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट h. तो हमने पढ़ा था ना, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट h क्या होता है? h रो g होता है. तो हमने ये हमें इक्वेशन मिल गया, इस p नॉट को उधर भेज देंगे. सो 2 p नॉट माइनस p नॉट इक्वल्स टू h रो g हमें मिलेगा, विच विल फर्दर गिव अस p नॉट इक्वल्स टू h रो g. तो p नॉट का वैल्यू हमें निकाल लिया, हमने SI में शुरुआत में ही निकाल लिया था. 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू h रो g. h का वैल्यू हमें नहीं पता, हम यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, ठीक है. एंड रो का वैल्यू हमें पता है 10 टू द पावर 3 एंड g का वैल्यू हमें पता है 9.8. तो h का वैल्यू सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8 एंड दिस विल गिव अस 10.2 मीटर. That means if I go at the depth of 10 to the power 2 meter below the free surface of water, the atmospheric pressure over there, the total pressure over there is twice the atmospheric pressure. The total pressure at that point is twice the atmospheric pressure. Right? Have you understood the way I have solved? Now moving to the next question. Now here is our next question. A cube of each side 5 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसका हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है, is placed inside a liquid. The pressure at the center of one face of cube is 10 Pascal. So we have to calculate the thrust exerted by the liquid on this face.
So diagram कुछ इस तरह का है. You don't have to draw the diagram in your exam. Just for explanation purpose, I am drawing. Suppose this is a container, quite a rough diagram, and here the cube is there. So the cube is having each side 5 centimeter, means 5 centimeter here, 5 centimeter here, 5 centimeter here. And if it is a cube, obviously it will be a cube like this. It will have a length, breadth and height. So the thickness is also 5 centimeter. So the water column is exerting pressure on this face. So what is the area of the face on which the pressure is being applied? क्या होगा area? Obviously the area will be the area of the cross section of the cube. That is 5 centimeter into 5 centimeter. That is 25 centimeter square is the area. तो हमने सबसे पहले हम एरिया को निकाल लेंगे. उसके पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे. गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है. गिवन क्या है, प्रेशर ऑन दिस फेस इज गिवन 10 पास्कल दिया हुआ है. ठीक है, हमें साइड दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब, that is 5 centimeter. That is also given in the question. Now what we will do, we have to calculate the thrust, but before that let us calculate the area of the face on which thrust is being applied or pressure is being applied. That is 5 centimeter into 5 centimeter. क्योंकि इसका area of cross section कैसा है, स्क्वायर है, और एरिया का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो हमने 5 सेंटीमीटर साइड और दूसरा 5 सेंटीमीटर साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें एरिया निकल गया फेस का. दैट इज, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. सो 5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर. हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. तो फाइनली हमें 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर ये एरिया मिल जाएगा. प्रेशर दिया हुआ है, एरिया निकल गया है. थ्रस्ट निकालना अब बाएं हाथ का खेल है. थ्रस्ट इज प्रेशर इंटू एरिया, the very basic formula that we have studied. Area is thrust by pressure is thrust by area, and therefore thrust is pressure into area. Pressure is 10 pascal, area is 25 into 10 to the power -4, and this will come in Newton, the final unit. So हमारा final answer आएगा 2.5 into 10 to the power -2 Newton. This is the answer. Moving to the next question.